अभी हम लोग ब्लॉगिंग करने के लिए जा रहा है और व्यू पॉइंट दिखाएंगे आप लोग को हाफलोंग का और ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी हम लोग ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं। तो मेरा साला है, हम दोनों ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं। ये गाइस, और आप लोग देख सकते हैं गाँव का रास्ता भी बहुत अच्छा है। ये हाफलोंग का व्यू पॉइंट है गाइस, और यहाँ से आप लोग को दिखाई देता है चर्च। अब देखिए हाफलोंग कितना खूबसूरत है, नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है। ये व्यू पॉइंट है। आप लोग जब भी आओगे हाफलोंग, पक्का ये व्यू पॉइंट को आप लोग विजिट करना। दिस इज अ ब्यूटीफुल अमेजिंग प्लेस टू बी seen and experienced by everyone guys. Now we are moving towards the bridge. एक बहुत ही शानदार जगह है जिसमें अभी हम लोग जा रहे हैं, मेरा साला और मैं। तो आप लोग बने रहिए और ब्लॉग को एंजॉय करते रहिए। आज जाएंगे ब्रिज। राइट नाउ हम जो है यहाँ हैंगिंग ब्रिज में है। ये पार्क है, बहुत ही खूबसूरत है। यूजुअली यहाँ पे फिशरी भी है, मछलियाँ भी बहुत ही वेरी नाइस प्लेस टू स्पेंड आवर हॉलिडे। मौसम भी बहुत अच्छा है एंड बेस्ट प्लेस टू विजिट एट विंटर। एंड यू कैन सी देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस, पार्क। As you can see, it's empty, very calm, a place to visit, a very beautiful place. आप लोग आइए और हाफलोंग को एक्सपीरियंस कीजिएगा। See you everyone. Bye bye. Guys, as you can see, I'm walking here. It's a nice place. It's nice to chill. And I'm here at Hanging Bridge. Moving. And it's a very beautiful place to visit, you know. You can come and experience. Thank you. हम लोग जा रहे हैं। We are going towards the migrated bird. The migrated bird, it comes here usually at the month of November to February. So we are going towards to that. And right now I'm with my brother. And you could see the beautiful place, the chilling climate out here. Now we are at Jatinga village. This village is very nearby the migrations of birds, and this village is very popular. And it's one of the historic place in Haflong. It's a very beautiful place. As you can see, the road conditions are very smooth and fine. And most of the people, they speak Khashia language out here. And you could see the beautiful place. So, अभी हम लोग जा रहे हैं, इसको बोलते हैं migratory bird, जहाँ पे पक्षी लोग आके जान दे देता है ना। इज अ प्लेस वेयर द बर्ड दे कम एंड दे कमिट सुसाइड। सो दिस इज द वे एंड वी कॉल इट बर्ड वॉच टावर। Right now I'm here at Bird Watch Tower. It's a migration of bird place where usually in the month of October, November, December, the birds they comes and they flew over here and they commit suicide out here. So यही जगह है जहाँ पे पक्षी लोग आते हैं, अपना जान देते हैं। You can just go the other side. वहाँ पे
बचपन में बहुत सारा कहानी सुने थे हम लोग, यहाँ पे पक्षी आते हैं और यहाँ पे अपना जान को गवा देते हैं. But right now so we don't see anything. But let's hope for a better, and hopefully for the people also, let's love the nature and let's maintain the beauty of it so that we can have a better environment in the days to come. Guys, आप देख सकते हैं कि another reason is that whenever the sun sets here, even in the camera you could see it's blurry, शक्ल अच्छे से नहीं दिखाई देता. इसी तरह से पक्षियों को भी शायद यही होता था कि वो लोग दूसरी ओर नहीं जा पाते थे. सो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक सनसेट जब होता है तो पक्षी जब वो दूसरे कंट्री से व्हेन दे फ्लाई ओवर हियर एंड दे आर नॉट एबल टू फ्ली ओवर द अनदर साइड, सो दे कमिट सुसाइड हियर. दैट्स व्हाई दिस प्लेस इज नोन एज माइग्रेटेड बर्ड. तो यहाँ पे ही आके वो लोग तकरार हो जाता है पहाड़ से और वो मर जाते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द रीजन अकॉर्डिंग टू द साइंस.